नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम, आपको वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी और मैं हैं इस वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी, द प्राइम मिनिस्टर इज बैक इन इंडिया। बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं एक बहुत ही सफल दौरे के बाद USA में और इजिप्ट में। Nobody expected the kind of reception that he would get in the United States of America and the kind of deals that he would sign, the kind of technology deals that he would sign. I never realized that in fact it was a great and pleasant surprise for me that the Prime Minister and his entire team was able to negotiate such technology transfer deals which have not been made available by the Americans to any other country anywhere in the world. They've been made available only to India. And I think that's a credit to Mr. Modi. Mr. Modi clearly told the whole world, if India grows, the world grows. India is resurgent India, and a strong US together can change the future course of this world. He was absolutely sure about what he was talking, absolutely confident about what he was talking. And Pradeep ji, over here, most important, we are talking about the figure that has come out is just $80 billion. $80 billion worth of defense purchases. All the entire deals that have been signed with the American government. And I'm only talking about government-to-government deals. I'm not even talking about what went on with Google, what went on with Tesla, what has gone on with the other major industrialists and other tech guys who have met him. I'm only talking about government-to-government deals. They are going to be worth at the very least, $190 billion. No wonder Biden can't stop smiling. India has created 1 million jobs in the United States of America. 1 million jobs, 10 लाख नौकरियां आज की तारीख में अमेरिका में हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इस डील की वजह से. And by the way, do you know what that means for India? 2.5 million jobs here. 25 लाख नौकरी लोगों को यहाँ मिलेगी भारत में, और 10 लाख नौकरियां मिलेंगी अमेरिका में. All because of what Mr. Modi has managed to get from the Americans this time. Sir, technology transfer is one of the most essential part for any country to prosper and survive. Yes. And you're getting the best technology in every field that he has designed. You talk about GE, you talk about various other places. The technology transfer was absolute must. And that was what China and Japan and China, what made China today a huge giant, because they had the best technologies with them. Everybody wanted to use technology and cheap labor of China. And that is what Mr. Modi has ultimately achieved. देखिए साहब, ऐसा है प्रदीप जी, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ. आज जो नरेंद्र मोदी जी गए ना वहाँ पे अमेरिका में, ये तो ठीक है. AI, Artificial Intelligence and America and India, जबरदस्त. और if you remember, he got more than 15 standing ovations. Actually, I counted 19. Yes. But they are saying 15. और बिल्कुल 4 कहाँ गई मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो 19 गिनी. और उसके अलावा 75 बार तालियां बजी मोदी जी के लिए. माफ कीजिएगा, AC is too strong. Anyway, I'm feeling kind of cold. मेरा ये कहना है, अरे यार बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पर AC. दूसरी चीज क्या है साहब, what people tend to forget, और बाकी जगह पे ये बात नहीं हो रही है. अली दारूवाला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम ये जरूर बात पूछेंगे कि साहब, Modi ji's America's visit has finally put China in its place. जो बाइडेन साहब ने क्या कहा, our relationship with India is far more comfortable because India is a democracy. We understand each other. With China, it's very difficult because China is a dictatorship. And why is the world not talking about that? I don't understand. Sir, ये अमेरिका के साथ जो आज डील हुई है, the deal which has taken place with the United States of America. Darwala sahab, I'm coming to you. Let me just finish over here, just one sentence, and then I'm coming to you. The deal which has taken place with the United States of America is going to be a game changer in this entire region and the entire world. The manufacturing hub that China was is going to shift to India, to Vietnam, and to other places. That's why the Chinese are worried. China के पेट पे लात मारी है साहब हमने. The entire power of China has been undermined by Mr. Modi's visit. Let's be very clear. Strategically, Mr. Modi has managed to achieve an objective which no other Prime Minister in the last 75 years had managed to do. Mr. Modi has done it. At the moment with us from the BJP, Mr. Ali Daruwala. Daruwala sahab, namaskar.
Good evening, Namaskar. I'm happy to join you, and I would Namaskar, like sir. to make one Namaskar. thing very Namaskar. Welcome clear. to Nation Now. Welcome, sir. Yeah. I'd like to make one thing very clear. What you're seeing today and what you're hearing, that India has surpassed China, and the demand for the world manufacturer known the country China is no more in that league anymore. It's because we are working last 3 years. In 2019, when we realized that China was totally arm twisting the country, not only India as well as the other nations, and trying to be a domain in the market. It's that time when Modi ji came up with a phrase, if you remember, made in India. Yes. This was very far fetched, where people did not understand what do you mean by made in India. It is 4 years back in Digital India, we took the initiative of making of the chips, getting everything produced in India. I would be very proud to say even the LED lights that were manufactured, each and every conductors that were coming from China is now produced in India. And we are not only producing in India, we are at par with the prices. And India is going to be the next manufacturing country for the world. We are going to be the world providers and not only for ourselves. At right now, you'll be surprised to know we are able to suffice our own demand. Our total import capacity has totally become an export capacity now. We are exporting to the other countries. So this turnaround, this magic, as I always use the word magic, was only possible because of the steel fist of our honorable Prime Minister. We were a crumbling economy. As we are going to go deep into the debate, you're going to realize this standing ovations and this respect that our Prime Minister is getting is the vision, the back office, and the team that is working with the Honorable Prime Minister of this country. So China is definitely not a threat. You will be surprised that the country that used to snarl at us is now scared of us. I can very responsibly say on a reputed channel like yours, India is not scared of China anymore. We never were actually, but let's get into that. But Mr. Daruwala, the fact remains, this is the first time I have seen. This is the first time in a long time, and I've been an observer of Chinese affairs now for a long time. The foreign minister of China has written 3 articles in the People's Daily in the last 10 days. 3 articles by the foreign minister, all about how India's visit to the United States, that is Modi's visit to the United States, is of no importance to China. Very clearly, the Chinese are rattled. The Chinese are really rattled, and that entire universe, of that Pakistan-Chinese lobby is completely rattled. They don't know what to do. They don't know where to go. I mean, look at what has happened in America. Forget about the US Congress, fine. I mean, joint session of the US Congress, the Senate and the House of Representatives together, the way they applauded Mr. Modi everywhere, the way Mr. Modi was treated like the superstar that he really is. And Joe Biden and his wife, Jill Biden, the First Lady, look at the manner in which they treated him. Look at what happened when he lands in Egypt. He is given the Order of the Nile, the highest civilian award of Egypt, an Islamic country. He is given to Mr. Modi. Now that is something which is almost impossible for that particular lobby to swallow. And I am shocked, Mr. Daruwala, I would like you to comment on this. What is the matter with these fellows? They're supposed to be Indian. हिंदुस्तानी है ना, ये जो रोदाली कुमार और ये बाकी सारी रोदाली जो यहाँ पर है, वो ये बाय रोदाली I hope you know what I mean, कि फ्यूनरल जब किसी भी बड़े सेठ का होता था तो औरतों को बुलाया जाता था रोने के लिए, हाय 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 चला गया हमारा, ये चला गया हमारा, वो चला गया. इनका अब सब कुछ चला गया है. प्रॉब्लम ये है, they are only concentrating on one question put forward by a Washington Post journalist, Sabrina Siddiqui, who by the way is of Indian origin. And look at the way Mr. Modi answered. I thought that was a perfect answer that anyone could give. And what is more, even Joe Biden supported him and stood by him. Mr. Daruwala. It is so surprising that these people who are breathing in my nation, eating our food and drinking our water, are being fed by the movement which has been hampered. There is a lobby that interest has been hampered. There are free trips to abroad. There are alcohol bottles. Yes. There are business class trips. Ask me. All have been stopped. Ask me. Mr. Daruwala, ask me.
Yeah, and this is hampering them so much. Yes, This is the last nail in the coffin, I can that's assure right. you, Pradeep ji and Rajiv sir. This is the last nail in the coffin, and come 2024 and you're going to see the changes, and all these movements that you're seeing, this Nakshal movements, this writing of blogs and using of the international media is the last nail in the coffin, and from here they're going to just disappear. You will be surprised to know all these people who have been asked to evacuate from The frame seems to have frozen. Mr. Yes. Daruwala, you there with us? We can't hear you, sir. Right, we'll try He's and got get a him back. call. We'll try and get him back. Pradeep ji, but the fact remains that as far as these guys are concerned, what is Mr. Daruwala talking about? Ask me. I've experienced this myself. There was a particular lobby only which was always invited to the Prime Minister's trips. He's back, Yes, he's back, Mr. Yes, Mr. Daruwala is Daruwala, back. you were saying, sir. Please go ahead before we lost you. Yeah, see, you know what happened? This there used to be a special aircraft. These people were ferried, and this lieutenant, and you'll be surprised. This bungalows that they were staying in, they've been asked to evacuate. See, there is so much unrest. The I'm from comfort zone Lutyens, has Delhi. been. No, I mean to say, even the good people are staying there. Is not that, but the people who have been No, asked but I was to staying in my father's evacuate. house. It belonged to my father. It was not a government house, right? Correct. That's why the water connection has not been cut. Yes. All these people who have been moved and their comfort zone has been disturbed. Yes. These are the people who are crying, who are crying foul. But believe me, this has to go. It takes time. This is the 60 years ka rubbish that we are cleaning. It cannot go so fast. But I feel that now Sal Bemisal of Honorable Prime Minister is reaping the benefits, and you will see it on the ground very soon, Pradeep ji and Rajiv sir. Mr. Daruwala, Obama, where Biden and the whole of US were totally with Modi and India, Obama gave a cryptic remark that Mr. Modi, the country is ignoring the Muslims and this will lead to major problems. And that was countered by Nirmala Sitharaman today, talked about how many times Obama has bombed the Muslim countries, 26,000 bombs put in the Muslim countries. Nirmala Sitharaman, Rajnath Singh went ahead and said, India is the only place when you find different sects of Muslim live peacefully and they survive and they prosper. That's what Rajnath Singh said. Now, how do you see the contrast? BJ, after Mr. Modi came back, the government has taken over. Two ministers of Modi government, two senior most ministers of Modi government, one's the defense minister and finance minister, lashing out at Obama for what he tried to do when Mr. Modi was there. Mr. Daruwala, you have been very secular and very forthcoming in your talk. How do you see this? Obama versus Nirmala Sitharaman versus Rajnath Singh. It was sooner than later. This, what I always call in Hindi, the asteen ka saap, they're all surfacing and they cannot absorb this. And this was the time, none other than today was the time when he had to make his statement. Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji said that a man who has bombed a Muslim nation 6 times should be the last person to be 26,000 bombs. the torch bearer of the Islamic countries. Sir, These Syria, people are Iraq, such fast- Pakistan, Afghanistan, Exactly, we have 26,000 bombs were dropped on Islamic nations by Mr. Barack Obama. 110%. 110%. See, this is the hypocrisy. You put a name Hussein Barack Obama, and what is he doing? Is bombing Islamic countries. Like this is what exactly the बोलते हैं, उनका नकाब उतर गया है, and all this peace that they're seeing in Asia is not being absorbed. The industry is at a standstill. The army is lying idle. The weapon industry is not doing any business because of this steel fist. जो बोलते हैं ना, lahu purush. Honorable Modi ji is not the leader of India, not of Asia, but he is the world leader, which is being accepted. And the standing ovation that Honorable Prime Minister is getting is in the acceptance, and the people are accepting him as a world leader. He is larger than life image But now. Mr. Daruwala, one small little thing. The first time that the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, addressed the joint session of the Houses of Congress, the Senate and the House of Representatives together, the invitation was extended by that same President Barack Obama. When he was president, at that time, he only had words of praise for Mr. Modi. Today, obviously, he is working for some other lobby at the moment. Why didn't he say anything at that time, Mr. Daruwala? See, very very guardedly, I'll tell you one thing. What is Why happening in guardedly? Punjab, what is happening in Delhi. Sir, why You know guardedly? why I'm telling you?
See, because there are this the country has been run on some certain forms of secrecy, and what the people need to know today is this aap sarkar, which is a Mufat ki sarkar, which is running in Delhi, in Punjab, and now in Karnataka, is the formula what they tried and they succeeded, and now that formula too started crumbling. It is the Canada, it is from the certain parts of Australia where there's Azadi and there's Modi Tere Tukde Hazar. This all has surfaced, and you're going to see heads rolling, people going behind bars because they are not enemy of my prime minister, but they are enemy of the nation. Their conspiracy is going to be exposed very soon, and this people who are leading this, the toolkit has been exposed. Their toolkit in this US trip did not work at all because there were conscious people, honest reporters like you, spokesperson like me, who day and night behind the screen were working to make this trip a success, but with honesty and not with fake narratives. Mr. Daruwala, And this all right, fake one thing, narrative has been one. exposed. Sir, one personal question. You're a Muslim, all right? You're a Muslim. 100%, yeah. Your name is Ali Daruwala. सर जहां तक मैं जानता हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहां तक मैं जानता हूं इस्लाम में 72 फिरके हैं, 72 72 फिरके हैं इस्लाम के, सिर्फ अकेला हिंदुस्तान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सुधार करें जो मैं आपसे बोल रहा हूं, सिर्फ हिंदुस्तान है जहां सारे 72 फिरके जो इस्लाम के हैं उनको पूरी इजाजत है, पूरी आजादी है। आप अपनी मस्जिद खुद बनाएं, अपने तरीके से नमाज अदा करें, अपने तरीके से दुआ मांगे, अपने तरीके से जो मर्जी करना है करें। एवरी फ्राइडे, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी फ्राइडे, हर जुम्मे को किसी शिया मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता हिंदुस्तान में। सर आप हमें यह बताएं, आर मुस्लिम सिक्योर इन इंडिया और नॉट? सर Rajiv sir, you have really pulled the string and the topic that I am expert in. I would like to elaborate on this thing. You'll be surprised, the triple talaq, that bill that was passed, it was welcomed by the Muslim ladies in this country. In that triple talaq, it was not seen, are you a Sunni or you're Brahilvi? Every woman from which is going to be implemented very soon. The people who are canvassing for this are the Muslims. You'll be surprised, all across the nation, people are moving with the uniform civil code. They are waiting because the rights of the Muslim women are upheld in this. All the blemishy, the polygamy and all is going to come to an end. And all the bills, if you see, indirectly or directly, are benefiting the Muslim community. All these bills were in the pipeline, were never passed. We are the last country to pass the bills which are in favor of the Muslims. Turkey, polygamy, double marrying 2 times, 3 times is all banned. Where Islam comes from, have banned, and it's not happened in India because it was in the benefit of the previous government which was ruling pre-2014 to keep them divided. The 72 firqas are so safe, so sound, and they're so happy in this nation that I cannot explain to you. And this 18 to 22% Muslim votes which are scattered are slowly being consolidated, and they're coming to Narendra Modi ji, to the BJP government, and to the government which is not done any appeasement, may it be Hindu, Sikh, Parsi, Isai. That's right. Mr. Daruwala, the Indian National Congress still has a problem. Mallikarjun Kharge today said the greatest, forget about the US visit, doesn't talk about the US visit. He says Manipur is a government failure. Manipur is a government failure. That is what Mallikarjun Kharge was telling. And he had to be countered by JP Nadda. He said JP Nadda, the BJP chief, your chief, said that BJP has in fact saved this country from Parivarvad. BJP or the Patna was pure Parivarvad ka ek baitak tha. The Modi and BJP has saved the country from Parivarvad, and this would have destroyed the entire country. And also talked about emergency, the darkest period of Indian democracy. How do you see Mallikarjun Kharge versus JP Nadda? Mr. Ali Daruwala sir. Very simple, Pradeep ji, which a common man can understand what Mallikarjun Kharge ji is saying about Manipur. He should be the last person to be talking about Manipur and the unrest and the loss of life that has happened over there. It is the Congress-bred issue.
The Britishers left it to the Congress, and Congress, instead of finishing it at that point in time, left the state to burn because they did not want to see any state being in peace, harmony, and love, because that did not solve the purpose. The party's agenda was to always keep people divided. Today is the Black Day, and this week is all going to be celebrated as a Black Day because the emergency, what was implemented by the late Prime Minister Indira Gandhi, and was assisted by nobody else but the ex-Prime Minister Manmohan Singh, who was the chief advisor at that point in time. And these people are coming and talking about what is right and what is wrong is really shameful. I really condemn what they said about Manipur. They are the last people to say. It is the Prime Minister's initiative, JP Nadda and Amit Shah ji, who has taken an all-party meeting. By the all-party meeting, it was decided, and the Chief Minister of Manipur has been conveyed by Amit Shah Sahab to bring peace to the earliest. All the stakeholders have been brought on the same platform, and things have been ironed out. Like the wrestlers issue was sorted out, the farmers issue was sorted out. You will be very surprised, and I hope and pray to God that Manipur issue too is sorted But out. over here, I at must the say earliest. this. I really must say this. All the wrestlers actually have come forward. 110%, because and if you each remember, life in we this had a country conversation counts. about this. Mr. Daruwala, we had a conversation about this right over here, and you agreed with us. And you, in fact, said that don't worry, it will be solved very And quickly. second thing about Parivarwad, as Pradeep ji rightfully said in Patna, is so shameful, so shameful. Narendra Modi ji comes from a family of a very common man, no political lineage. Our Chief Minister Yogi ji from UP, no political lineage. Devendra Fadnavis ji, no, very simple, humble background. Myself as a spokesperson, Well, no but his father political was a background, politician. no knowledge about politics, but just picked up because of passion and compassion for the party. This is what we need to give, not that who's your father, mother, and it is a dhanda in the family. This is not going to be tolerated in BJP. Let me put it on record, and I affirm and I very strongly stand by my statement. Yeah, but over here, let me appreciate what the government has done with regard to the wrestlers. All the wrestlers have come forward. In fact, they came forward yesterday, and they said very, very clearly that we wanted a charge sheet to be filed. The government has done it. They have acceded to our demands. Whatever we wanted, they've already done. A charge sheet has been filed against Mr. Brijbhushan Sharan, and we are happy. So let the law take its own course. That's what they said, and which, by the way, was 100%. fantastic. On the same channel, we did that. Yes, which is fantastic, which is really great. With that particular problem has been solved. Manipur remains a sore point. Irrespective of whosoever started the problem, the fact remains that the responsibility remains with the government. Irrespective of where the problem started, it doesn't matter. What matters now is that peace must be restored, and must be restored instantly, and loss of life is terrible. Even one loss of life is absolutely terrible. But over here, let me ask you again, the whole world, by the way, the whole world in terms of the same Wall Street Journal, by the way, which from where Sabrina Siddiqui comes from. Sorry for taking her name. She was just doing her job. No, I don't care, yeah. You know, and all the other financial papers in the United States, including, by the way, The Economist, which of course is from London and one of the most respected right-wing pro-capitalist journals in the world. They are praising Modi. They are praising what Modi has managed to achieve in India. In terms of macroeconomic stability, today India remains the only nation in the world that has managed to achieve macroeconomic stability, which is fantastic. Today, as far as India is concerned, India is ready to take off. In another 3 years, we will genuinely be the third largest economy in the world. Today, we are the fifth largest economy. And what Mr. Modi promised in the US Congress, that very soon we will be the third largest economy, will actually come true by the year 2026. That is actually going to come true. So, why are the people here crying? What is the matter with them? Is it only because they have lost their freebies? Is it because of that, Mr. Daruwala? No, it's so silly. It's really so silly that India is a power which cannot be stopped. All that Modi ji did was
directed them, held their hand, their finger, and led them on the right path. These people could have done when they were in power, but they did not do it because their interest was above the interest of the nation. And when you are exposed and they feel bad, so what do? Even a good work for the sake of opposing, they oppose. This government is so badly exposed, Pradeep ji and Rajiv sir, that they cannot do without agitation. As you say, whatever you do, the same people, no matter what the platform is, you'll see the same bunch of people, the same Arundhati Roy, the same, it's really that Yadav and Mr. Daruwala, Kanhaiya here Kumar we and have all a big these people on problem. the same platform. Mr. Dev And Fadnavis, these are the Devendra Fadnavis ji has accused Sharad Pawar, he's accused Uddhav Thackeray. He said, you are complaining about Eknath Shinde breaking away with 40 MLAs. But Sharad Pawar in 1977 broke along with 40 MLAs and formed a government, a separate government. He says that is a just cause and Eknath Shinde is a bad cause. That's what you are saying. That's what he has talked about Uddhav Thackeray. He went ahead and told Uddhav Thackeray ji, if you are saying that you got something about my family, please come out. I challenge you, come and project it to the people, show it to the people. I am not getting involved in petty things, but if I get involved in the petty things, Mr. Fadnavis said, then I take it to its logical conclusion. Mr. Dhanuwala, that was a great statement by Fadnavis. How do you see that? And Sharad Pawar ji also has reacted. He says, Fadnavis was a kid when these things happen, he doesn't know. How do you see Dhanuwala, sir? See, Maharashtra being my domain, I can say with authority what Honorable Deputy CM Devendra Fadnavis ji said. I totally endorse it and I stand by it. The rift in the party is so evident. The OBC community guy has requested that the party leadership be given to him. Like you see this You mean Mr. Chhagan Bhujbal? You mean Mr. Chhagan Bhujbal? Ji. Correct. We all heard on their local newspapers, like it is surfacing, the divide is surfacing in the party. The party that is dying is going to crumble down. What you do is you misguide people. You misguide them by raking up different issues. And Honorable Devendra Fadnavis ji, a man with such a clean image, what can you find? He said, if you have something, do come up. That man got Maharashtra on the roadmap and we are doing exceptionally well. And coming back to Eknath Shinde, sir, they broke away from their parent party only because their ideology was diluted. They were sitting next to Vichardhara, like who wanted to name their parks Tipu Sultan, who were flashing placards of Aurangzeb, and we have Uddhav Thackeray ji, Honorable Uddhav Thackeray ji, going on the mazar of Aurangzeb. Like, how much can you dilute? The same people who shed their blood fought with us for Ram Mandir and their liberation of Babri Masjid and breaking down of that dhacha is sitting and doing things in the dargah is really shameful. Eknath Shinde ji could not bear to see this and he broke away and he has joined BJP. BJP is a party with ideology. We came with the mandate of the people with certain principles and we will not dilute. And Eknath Shinde ji has joined my party with the same ideology, which we respect him. And sooner or later, you will be surprised. Uddhav ji is also to follow the suit. You can run this on your national television. Uddhav ji will wake up one day and it will not be late and so. he will be with us. And let's be very clear, this is for our viewers. There is not a single black mark or not even a single allegation of any kind of corruption. And I can say this with the greatest of authority of my last 42 years in journalism against Mr. Devendra Fadnavis. He is the cleanest politician today in Maharashtra. देवेंद्र फडणवीस जी ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर एक भी दाग नहीं है साहब. तो वहां पर and for his clarity and for his honesty, yes. I can vouch on this national television. Absolutely. But Pradeep ji, very interesting. So when do you think Uddhav ji is going to come back? मतलब सुबह का लौटा शाम को वापस आ जाए, वो शाम कब होगी सर? भोला नहीं कहलाता. वो 100% भोला नहीं कहलाता. Yeah, I'll tell you one thing. With lot of responsibility, I am saying Uddhav ji is realizing, he's feeling the pain, but it is like the thing of breaking the ice. Let our Prime Minister come back. Amit Shah ji is on the job. He's back, and sir. we will not
let our single family member go astray. Like, I am too small a man, but I can assure you, Uddhavji is being suffocated by the jackal, and the day is not far. He will get out of the clutches, and he'll be seen. And we are too small. This life is too short. Nobody is a permanent enemy. Neither nobody is a permanent friend. As long as ideology is concerned, we are not going to compromise. I'm sure Uddhavji and Aditya Thackeray will see the light of the day very soon. Darwala Sahab, you got a problem where the opposition is accusing you of using KCR, K. Chandrasekhar Rao, the BRS. They say it's a B team of BJP. They have made inroads in Sholapur, in the western Paschim Maharashtra. They are going in Marathwada and Vidarbh too. KCR today is in Sholapur with around 400 vehicles or 600 vehicles with all his MLAs camping in Sholapur, taking Ashirwad in Pandharpur. The opposition says that the first B team of BJP, Mr. Owaisi, has slowly declined his value. So Chandrasekhar Rao is being infused as second B team of the BJP. And political experts, political pundits say that this Chandrasekhar Rao is going to eat into the Sharad Pawar vote, NCP vote, and the Congress votes in a big way, a big margin. He's going to strike there. How do you see? Is this the B team of BJP, sir? Time and again, it was accused that MIM is the B team of BJP, and Ajit Pawar is a B team of BJP, and now it is KCR. It's so funny and ironic. We respect Mr. KCR for what he's done for his state, where he's got his state from dungeons to what success he has done. And when someone does a good job, my nature. I am not here to criticize for the sake of criticizing, but the days of KCR is numbered. It is his son who's going to lead, the most educated politician that I have ever come across. But I feel with this education, one day his son KTR is going to be the real BJP and not the A, B or the C team of BJP. Mark my words, the son is intelligent, he will see. And to take this nation and this country and the state to levels what the son has a dream, I would not be surprised if you see things rolling even at the KCR camp. So in effect, you have So made everybody is welcome. two predictions here. So in effect, you have made two predictions here, sir. Very important. One, Uddhav Thackeray ji will be back with the BJP. He would have realized his mistake. In all likelihood, he'll come back. And KCR Saab's son KTR, in all likelihood, will be part of the BJP at some point of time. Am I right, sir? Mr. Darwala, I couldn't hear it properly. Mr. Darwala, can you hear me, sir? Can you hear me now, sir? I can't hear Mr. Darwala, and I think Mr. Darwala can't hear me. Yes, there is both two-way communications not going. Right. Mr. Darwala, can you hear us, sir? Yeah, there's Yes. a communication gap. Can you hear me now? Now I can hear you, sir. Right. What I said was you made two predictions. One, Uddhav Thackeray ji will be back with the BJP because he would have realized the error of his ways. That is one. Number two, Yes. you expect KCR's son to evolve in such a manner that he may be part of the BJP at some point of time. Am I right, sir? Correct. To elaborate and to make my statement a more cemented statement, these two are youngsters. They have a future in front of them. And with this Parivarvad and the mistakes that their family has made, they know they cannot go far away. Jagan, KTR and Aditya are the future. They are bright, they are brilliant, they are hardworking, and they need direction. And Honorable Modi ji, Yogi ji and Devendra Fadnavis ji are the people who are going to lead this nation, and we need young blood like them. We appreciate good work done is a good work done, and if this young blood is infused into BJP, it will only help in building my nation, not breaking my nation. This is what we believe in: constructive politics and not decisive or divisive politics. Fantastic, absolutely fabulous, sir, brilliant. Mr. Darwala, Sharad Pawar ji tried to defend his party that this party doesn't belong to only Marathas. Mr. Bhujbal had said in very strongly worded terms that OBC has to given the presidentship of Maharashtra, and he told it the first time we heard Bhujbal say in such terms, no, all this NCP will be considered an organization that dominated by Marathas.
Now Sharad Pawar sahab, today he had a conference where he took on Devendra Fadnavis as well as tried to hush up Chhagan Bhujbal. He told Mr. Fadnavis that you are accusing that this party uses OBC only for namesaking, just to show that OBC is a part. That is what Fadnavis said. Then he went on to say that Mr. Bhujbal himself was the president of the party for some time. After Bhujbal, there was Pichard who was the president of the party. Tadkare was the president of party. He belongs to the OBC. So, Tadkare. Yes, Tadkare. So, do you think this will go on well with the people? Are the people watching? Because Bhujbal is a tall leader among the OBCs. He said, you can give if not me, you can give the reins to Jitendra Awad. Jitendra Awad is capable. Dhananjay Munde is capable. He gave the names of people who are efficient as on today the OBC is concerned. Do you think that Sharad Pawar ji is going to budge? Is he going to budge? Is he going to come down and accept Awad or accept Dhananjay Munde? Do you think some changes are going to happen? As a political pundit, because you say it's not my politics. That's what I always keep telling you. And on this national television today, I'd like to make it very elaborate and let it go viral. This Sadawa Khayal of this party led by a community has to go. What has to be the merit over here is the leader who has the capability to lead the party and not from what community he comes. Mark my words, BJP is thinking, there's a think tank who's working, there's reservations, this whatever, the caste system needs to go. If this country has to develop, caste system reservation needs to go. Let it begin with our party. As the nation is too vast and it's too early, we can have knee-jerk reactions. If you're so confident and you're so honest of what you mean to say, why don't you run elections in your own party and then see who comes as the party leader? Why don't you do it like how BJP has done with Mauritius? With our work, we have been selected. I've been sent on television to debate if I have potential in me. It's not because I'm somebody's son or somebody's daughter. If you are so honest, why do not you give the chance to somebody? Why is it your daughter every time? Why it cannot be someone like or John nephew? Patel? Well, or nephew. Why it has to be in the party? Just prove it by doing it. Get some layman from a village and say he is the party leader. Let us see. We are waiting and the world is watching what Sharad Pawar Right. wants. We shall have to wait for a long, long time for that, I think. For a very long time. In any event, Mr. Daruwala, always a pleasure talking to you, sir. And congratulations again. Thank you. What a lovely, Thank what you. a successful tour that the President, that the Prime Minister has had. Fantastic. Huge transfer of technology. My God, I'm really excited, especially about the GE, General Electric, Indian Air Force Memorandum of Understanding, which means our fighter planes will actually have the engines they deserve. That will be really something. That will be a game changer in this part of the world, leaving both the Chinese and the Pakistanis gnashing their teeth. That is going to be really something else. By the way, the Indian Air Force is very excited about it. It is fantastic. And also, the 31 Predator drones that we are getting, oof. But we'll have that conversation at some other point of time. Mr. Daruwala, great pleasure talking to you. Namaskar, sir, and Vande Mataram. Thank you. Thank you. Vande Mataram, sir, Vande Mataram. Thank you. Right, and that, of course, Mr. Daruwala, naturally doing a good job defending the BJP and projecting whatever. But, Pradeep ji, उद्धव ठाकरे जी वापस आएंगे बीजेपी में और केसीआर के बेटे केटीआर एक ना एक दिन इवॉल्व करेंगे और आखिर में भारतीय जनता पार्टी में ही आएंगे. Wow, that is something. There is two. But if you see, sir, regional parties, the common enemy here is the Congress. If the Congress will not, groom them, treat them well, or show large-heartedness and large-heartedness, yes. But Rahul Gandhi did said that the Congress is ready for sacrifice. He said we'll move 2 steps ahead and we offer sacrifice. So probably. सर ऐसा है, राहुल गांधी जी ने तो कह दिया, अब आगे कांग्रेस उसमें क्या करती है उसके बारे में हम पूछते हैं हमारे पुराने मित्र निजामुद्दीन रहीम साहब से. निजामुद्दीन रहीम साहब, नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं? जबरदस्त. बिल्कुल अच्छा हूं सर. एक बार फिर स्वागत है आपका नेशन नाउ में. अब तो आप ही का चैनल है, लगता है कि आप हमारे साथ ही काम करते हैं. लग बिल्कुल ऐसे रहा है. निजाम साहब ये बताएं जी, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए. निजाम साहब, लग ऐसा रहा है कि जिस प्रकार पटना की मीटिंग हुई उससे भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत खलबली मची है, लेकिन
अभी हाल ही में हमारे साथ अली दारूवाला साहब थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको क्या लगता है सर? सर उनसे कहिए सपना देखना बंद कर दें, उनसे कहिए सपना देखना बंद कर दें सर। 2024 की तैयारियां अपने आप हो रही हैं, लोग खुद जुड़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो चीजें कभी संभव नहीं थी एक साथ बैठने की, वो सब बैठने लगे जी। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है 2024 की तैयारियों को लेकर। इसलिए इस तरह की बातें करना कि ये जाएंगे वो मिलके आएंगे ऐसा हो जाएगा। आप इनके नेताओं का बयान देखिए, बबन कुले जी का और दूसरे नेताओं का, कि कोई ताकत इनको जो है अब बीजेपी में नहीं लाने देगी और हम इनको बीजेपी के लिए सारे दरवाजे इनके बंद हैं। ये इनके नेताओं के भाषण है, या तो ये झूठा है या फिर इनकी पार्टी के वो दोनों नेता झूठे बात कर रहे हैं जी। जो इनकी लीडर्स हैं महाराष्ट्र के, जो टॉप क्लास के लीडर्स हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं और इनके उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों का बयान है पिछले हफ्ते ऑफिशियल कि इनको जो है अब हम कभी भी पार्टी में नहीं लेंगे, उद्धव जी के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, ऐसा बयान उनका है जी। लेकिन एक चीज तो है, जिस प्रकार लालू यादव जी ने ऑपोजिशन का दूल्हा कहा, यानी गैर भारतीय जनता पार्टी संगठनों का दूल्हा कहा जनाब राहुल गांधी साहब को, उससे तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, साफ हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक नहीं लग रहा था, बड़ी बड़ी फ्रैंकली आपको बात बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं, अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि बाकी जो वो गैर कांग्रेसी संगठन हैं इस ऑपोजिशन यूनिटी, इस ऑपोजिशन कोalition में, कि वो राहुल गांधी जी को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब लोगों में ये बात आ रही है कि कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले सकती है और लड़ सकती है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या निजाम साहब? सर आपको याद होगा कि कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री के इशूज को लेकर बहुत ज्यादा नहीं करती। आपने सोनिया गांधी जी का इशू देखा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर ठुकराया और आदरणीय मनमोहन सिंह जी आज तक कभी हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ सबसे सर, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जी। यस, कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस देश से सांप्रदायिक ताकतों का खात्मा, क्योंकि ये देश जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि बातें कुछ भी करते हैं, प्रधानमंत्री अलग, राज्य का मुख्यमंत्री अलग बात करता है, दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री अलग बात करता है। इनके यहाँ लीडरशिप में कोई तालमेल ही नहीं है, किसको क्या करना है देश में वही नहीं पता है। एक ही मुद्दा है बस, किसी तरह से इस देश में मुसलमानों को मारो या मुस्लिम धर्मस्थलों को तोड़ो या मुसलमानों के विरुद्ध कोई बात करो जिससे हिंदू संगठन ऑर्गेनाइज्ड होकर बीजेपी को मदद करें। इसके अलावा ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना ये कोई चीज लागू कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। निजामुद्दीन साहब, जेपी नड्डा जी ने आज दो बात उन्होंने पूरे देश को कहा, कि दो बात, कि बीजेपी ने इस देश को परिवारवाद से बचाया, नहीं तो परिवारवाद ने इस देश को खत्म करने वाला था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के बाहर जाके जो कहते हैं वो देश को नुकसान पहुंचाता है। यूके में जाके कहा कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान देश का लोकतंत्र खतरे में है और मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड। और वही जाके यूएस में मोदी विजिट से पहले कहा कि मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। आज ओबामा ने उसी चीज को लेकर मोदी जी पर खींचा, उन्होंने कहा, उंगली उठाई, उन्होंने कहा यू कैन नॉट इग्नोर मुस्लिम्स एंड दैट विल लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स, ओबामा साहब ने कहा। उसके बाद हमने देखा इंडिया के दो सीनियर मिनिस्टर्स ने उनके खिलाफ बयानबाजी की है कि ओबामा खुद, जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 मुस्लिम देशों को 26,000 बॉम्ब्स डालकर ओबामा ने किया है मुस्लिम के खिलाफ विरोध। और राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री वेयर मुस्लिम्स ऑफ ऑल फेथ लिव टुगेदर। तो हाउ डू यू सी दैट सर? जो जेपी नड्डा जी ने राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया, कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, और उसके बाद जो रिएक्शंस हो रहा है, हाउ डू यू सी इट सर? सर, नड्डा जी ने जो कहा है उससे बड़ी झूठ कोई नहीं हो सकती। परिवारवाद की नड्डा बजी बात करते हैं, उनसे कहिए कि राजनाथ सिंह उनके बेटे राजनीति में, आप उनसे कहिए कि खुद शाह और उनके बेटे का आप देख ही रहे हैं
ऐसे दर्जनों नाम मैं आपको बीजेपी में दे सकता हूं जो परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, और जिस तरह की वो बातें करते हैं वो निहायत झूठ बोलने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी और सीतारमन जी जो बातें कर रही हैं उससे ज्यादा खतरनाक बात तो असम के मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने तो, उनको तो चाहिए कि जिस तरह से वो नेताओं के ऊपर अपनी पुलिस भेजकर कार्रवाई करते हैं, उनको चाहिए ओबामा को पकड़ ले आए हिंदुस्तान, अगर ओबामा ने ये बात कही है तो। आप खुद सोचिए कि जो सत्य है, जो सत्य है वही बात वहां लोगों ने कहा। ये तो किसी सरकार ने या कांग्रेस के आदमी ने व्हाइट हाउस में नहीं कहा, ये बात एक टॉप क्लास के जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा। 9 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार मुंह खोला और देश को शर्मसार कर दिया। आप उनके वीडियोस को देख लें, आप समझ लें कि पत्रकार ने जो चीज उनसे पूछा उसका भी उन्होंने झूठा जवाब दिया। अगर उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुसलमानों को तकलीफ नहीं है तो इनके मंत्रियों से पूछिए कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गोली मारो। इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुसलमानों के साथ कारोबार बंद करो। इनके लोगों ने कहा कि इस मुसलमानों को वोट का अधिकार छीन लो। ये सारी बातें इनके लोग ही करते हैं। तो या तो मोदी जी झूठे हैं, और अगर मोदी जी सत्य हैं तो जो लोग झूठे हैं उन पर कार्रवाई हो, और अगर दोनों बातें अगर उनको लगता है कि ये सही है तो मुसलमानों को आज तक उन्होंने अपनी कैबिनेट में रखा था, वहां से निकाल बाहर किया, और दूसरे राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां भी किसी भी मुसलमान को प्रमोट नहीं करते। तो ये सारी बातें मीडिया के सामने हैं। कुछ चंद मीडिया के लोग इस तरह की गलतफहमियां पैदा करते हैं। इंटरनेशनली लेवल पर जो संस्थाएं हैं अगर वो सवाल करती हैं और वो भारत के सही चित्र को प्रदर्शित करती हैं तो ये किसका फॉल्ट है? निजाम मोदी साहब जी ने खुद शर्मसार किया। निजाम साहब, क्या असल में मुसलमान खतरे में है हिंदुस्तान, लगता है? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, क्या असल में हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं? मुसलमान कभी हिंदुस्तान में खतरे में नहीं रह सकता, लेकिन उसको अगर जबरन आप तकलीफ देंगे तो खतरे में है ना। आप उसके लॉस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप जो है उनके घरों पर जबरन बुलडोजर चला के तोड़ रहे हैं। देश के कायदे कानून में कहीं नहीं है, देश के संविधान में ऐसा नहीं है। अगर होता तो दोनों के लिए होता, लेकिन जिस तरह की कोशिश की जा रही है, और ये बातें जवाबदार लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं वो कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अगर कहता है, आप गिरिराज किशोर का बयान देखिए, अनुराग ठाकुर का बयान देखिए, आप उनके चीफ मिनिस्टरों का बयान देखिए, जिस तरह से इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही है। अगर प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं तो उन्हें चाहिए कि उसके बचाव में उनको आना चाहिए, और वो सिर्फ दिखावा करने के लिए अमेरिका में कि हम मुसलमानों के साथ हैं। उन्होंने कौन से मुसलमानों से अमेरिका और मिस्र में मुलाकात की, मैं उसके तबसरे पर नहीं जाता। आप उनकी तस्वीरों को देख लीजिए, हिंदुस्तान में उनके लोग कितने हैं और भारत में कितने लोग हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए ये बातें करना, ये सिर्फ डराना धमकाना, सत्ता हासिल करने के लिए वो इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी रिसेंट आप देखिए कि महाराष्ट्र में 2-2 जगह मॉब लीचिंग होती है, सरकार के किसी नेता का कोई बयान नहीं आता। वो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी बैठे हैं, उनका कोई बयान नहीं आता। तो इससे लगता है कि मुसलमानों को हर्षा कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश हो रही है, उनके इदारों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनके धर्मस्थलों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। लेकिन निजाम साहब, जो आपने कहा कि बुलडोजर भेजना किसी के घर के खिलाफ, ये कहाँ का कानून है? दुरुस्त बात है। प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड एवरीवेयर, बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ लॉ। इवन अ स्लम ड्वेलर, इवन somebody who has encroached on land has rights. कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसके घर को डिमोलिश किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मैं मानता हूं। लेकिन जो आपने कहा कि सिर्फ कोर्ट तक तो मुद्दा ही नहीं जा रहा है सर। अगर कोर्ट किसी को ऑर्डर करता है तो इस देश का सम्मानित नागरिक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं। सारे लोग कभी भी कोर्ट के विरुद्ध में कोई नहीं गया। लेकिन कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही किसी का घर गिरा देना,
बुलडोजर बोझ को तोड़ देना, धार्मिक स्थल को तोड़ लेकिन देना, क्या उनके सिर्फ इदारों को मुसलमानों के डिस्ट्रॉय ही? करना। अरे सर सवाल तो सुन लेना, निजाम साहब आप तो दोस्त हैं हमारे, आप तो दोस्त हैं हमारे, तो सुनिए ना। सिर्फ मुसलमानों के ही घर नहीं तोड़े गए, विकास दुबे का भी तो घर तोड़ा गया, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो उसने अपना महल बनाया हुआ था वो भी तो तोड़ा गया निजाम साहब। लेकिन सर जब वो दबाव बढ़ा, मैं किसी क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूं सर, जी जी, मैं जनरली उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल इस देश के संविधान को मानते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। उनको चाहिए कि कोर्ट से ऑर्डर लाए ना, सरकारें इनकी है, ये जिस तरह से चाह रहे हैं ऑर्डर निकालते ही है ना, तो कोर्ट से ऑर्डर निकाल के अगर किसी का घर तोड़ना है तोड़े, कोई आदमी विरोध नहीं करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री हो या प्रदेश का कोई मंत्री है और वो डायरेक्ट बयान देता है अगर किसी के विरुद्ध, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, सरकारों से हटकर नहीं है। दुरुस्त बात। और अभी जो उत्तराखंड की जो स्थिति है वो अभी ठीक हुई है, जो आपकी क्या इंफॉर्मेशन है सर? उत्तराखंड सर में आप movement चल देखिए, रही है। उत्तराखंड एक पवित्र नगरी है जी, वहां सारे धर्म के लोग जा सकते हैं, अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, और वहां का मैसेज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में जहां जहां हमारे हिंदू भाई बसते हैं सबके लिए वो पवित्र है। अगर वहां का मुख्यमंत्री या वहां का मंत्री या वहां का बीजेपी का नेता अगर ये बात करता है कि मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, तो आप उनसे कहिए कि अयोध्या में भगवान राम को चढ़ने वाली जो चुनरी है जो चढ़ाते हैं वहां, वो मुसलमान बनाता है, और बनारस में भगवान विश्वनाथ के लिए चढ़ने वाली पियरी चुनरी जो है वो भी अंसारी बनाता है। और जो परिक्रमा करते हैं अयोध्या में 9 किलोमीटर की, उस परिक्रमा में पहनने वाला खड़ाऊ भी मुसलमान बनाता है। तो कहिए कि सारा बंद कर दें। जहां धार्मिक स्थल है, मिर्जापुर आप चले जाएं, मिर्जापुर में देवी को चढ़ने वाली चुनरी जो हम लोग बांधते हैं सरों में, वो वहां का अंसारी बिरादरी बनाता है। तो जब आपको इतनी नफरत है तो धर्मस्थलों पर चढ़ने वाली चीजों को भी आप बैन कर लीजिए ना। तो निजाम साहब, तो फिर मुसलमान खतरे में कैसे हुए? ठीक है, तो फिर ये सब जो आप बता रहे हैं, आपने मिर्जापुर की बात करी, आपने बनारस की बात करी, आपने अयोध्या की बात करी, ये सब तो मैंने खुद देखा है कि जो खड़ाऊ बनती है वो भी मुसलमानी बनाता है, जो चुनरी बनती है वो भी सारे अंसारी बनाते हैं, संत कबीर की बिरादरी के लोग बनाते हैं, एक एक चीज वहीं से आती है। यहां तक है कहीं कहीं तो हलवा भी वहां से बनता है। और तो और छोड़िए, अब जबान मत खुलवाइए मेरी, सीधी बात है। उसके बाद जाकर के उस पर वर्क चढ़ाया जाता है, और वर्क भी जो है वो भी मुसलमान बनाते हैं, ये भी बता दूं आपको। जी सर, जी। तो फिर मुसलमान खतरे में कैसे हुआ, ये तो बताओ। फिर मुसलमान खतरे में कैसे हुआ? नहीं, मुसलमान खतरे में, सर खतरे में होने का इशू है कि आप लॉ उनका चेंज करना चाहते हैं। आप जो है उनके धर्म स्थल को तोड़ रहे हैं, आप उनके लोगों का डायरेक्ट इनकाउंटर पुलिस करती है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती, और सीधे सीधे केंद्र के मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद करो। वो कहते हैं मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। ये बातें जो है जिम्मेदार आदमी जो संविधान की शपथ लिया है वो कह रहा है। अगर ये बातें कोई जनरल पब्लिक कहती या दूसरा कोई कहता तो बात नहीं होती। इस पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी जुबान बंद रखते हैं। कितनी कार्रवाई उन्होंने किया कपिल मिश्र के मामले में, दिल्ली वाले मामले में। आप देखिए कि कोर्ट बाद में उनको छोड़ती है, और जिन लोगों को आप जबरन आरोपी बना के डालते हैं, अदालतें उनको बरी कर देती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो उनको डराने धमकाने का काम हो रहा है। ये इस देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो रियल हिंदू है, जो रियल हिंदू संस्कृति को मानता है, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेगा। इन सब का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि बजरंग दल के ही लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आगरा में गाय खुद काटा इन्होंने, और मुसलमानों के सर थोपने की कोशिश किया, लेकिन वहां लोगों ने बता दिया। तो इससे ये साबित होता है कि इनको धर्म से कोई आस्था नहीं है। निजामुद्दीन जी, बीजेपी का कहना है, बीजेपी सेइंग दैट कांग्रेस इज रिसोर्टिंग टू मुस्लिम अपीसमेंट। कांग्रेस को जो विजय हुआ कर्नाटका में, उसके बाद एक पैन इंडिया एक ढंग से कैंपेन चला रहा है कांग्रेस, जिसमें मुस्लिम अपीसमेंट, जैसे सत्ता आने के बाद तुरंत आपने सावरकर और हेडगेवार का चैप्टर सिलेबस से हटा दिया। आपने जयराम रमेश जी ने गांधी पीस प्राइज जब गीता प्रेस को गया, जयराम रमेश जी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाया।
कहा कि महात्मा गांधी के विचार और गीता प्रेस के विचार अलग अलग है। तो आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रॉपर कैंपेन चलाया जिसमें पूरे मुसलमान अपीसमेंट के तहत पूरे मुस्लिम वोट आप 2024 में यह चाहता कि रीजनल पार्टी से छोड़ के जो गए थे वापस आके कांग्रेस में, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन कांग्रेस चला रही, दैट इज बीजेपी एलिगेशन। सर निजामुद्दीन, इसका आप कैसे करोगे? सर सभी राजनैतिक दल को यह अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश में किसी भी तरह की कैंपेन कर सकते हैं। किसी ने अल्लाह या उसके रसूल या कुरान के नाम पर वोट नहीं मांगा। किसी ने जाकर मुसलमानों से नहीं कहा कि आप जो है अल्लाह के नाम पर वोट दे दीजिए, लेकिन उसी कर्नाटक में उन्होंने भगवान बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा। प्रधानमंत्री ने, उनके लोगों ने मांगा, उन्होंने संविधान की अवहेलना की। अगर कांग्रेस के लोगों ने उनसे कोई कमिटमेंट किया तो कर्नाटक की जनता ने उनको चुना। कांग्रेस ने खुद जाकर वोट नहीं ले लिया। कांग्रेस ने वहां जो अपने मैनिफेस्टो में कहा, वहां की जनता ने उनके मैनिफेस्टो को स्वीकार किया और उसी मैनिफेस्टो की बात को मानकर कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इसलिए उनको वोट दिया और उनकी सरकार आई। जहां तक गीता प्रेस का है सवाल है, आप देखिए ये देश सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे नहीं चलेगा। ये देश सेकुलर था, है और रहेगा। इनके लाख चाहने के बावजूद भी इस देश में गलत चीजें नहीं होंगी। लेकिन आप बताइए, क्या इस देश में किसी रिलीजियस अल्पसंख्यक ने कभी ये कहा कि आप जो है हमारी मस्जिदों को तोड़ा या गिरजाघरों को तोड़ा या हमारे गुरुद्वारे को तोड़ा तो हम हिंदू भाई की मंदिर को तोड़ेंगे? कभी किसी लीडर ने कहा क्या? जब हमारा कोई आदमी इस तरीके की बातें नहीं करता तो ये गलत बयानी क्यों करते हैं? और जहां तक इशू जो अभी आपने कहा कि गीता प्रेस, सावरकर, ये सारे विषय जनता के सामने कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ले आई थी और उस मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादा किया उस चीज को वहां की जनता ने स्वीकार किया। सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर सिर्फ सवाल मुसलमानों का होता तो बाय इलेक्शन यूपी में हुआ, क्यों नहीं कांग्रेस वहां जीत पाई? तो इसका ये मतलब हुआ कि जहां की जनता जिस तरह से अपने परिस्थिति को देखती है वोट करती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस सेकुलर देश बनाना चाहती है, जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में थी, जो सरदार पटेल की जमाने में थी, जो गांधी जी के जमाने में थी। उससे हटकर इस देश में कोई काम कांग्रेस नहीं करना चाहती। क्योंकि हिंदुस्तान तो शुरू से सेक्युलर था और रहेगा, उसको तो कोई हटा नहीं सकता है। सीधी सादी बात है। यस सर। यहाँ पर तो ये हुआ, आप जवाहरलाल नेहरू पंडित जी की बात कर रहे हैं या इंदिरा जी की बात कर रहे हैं या राजीव जी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सीधी सादी बात है, आपके वोट आपसे बिछड़ गए। आप ही के लोगों ने आपके वोट आपसे छीन लिए। सीधी सादी बात है। जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, ममता बनर्जी की टीएमसी हो गई, अब नीचे आप देख लीजिए वाईएसआर केसीआर हो गए। ये भाई देखिए, ये तो पूरा कांग्रेस यूनिवर्स था ना एक जमाने में, कांग्रेस का ब्रह्मांड था। अब यहाँ धीरे धीरे कांग्रेस के वोट वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भले आप उसको माने या ना माने, प्रांतीय पार्टी जितनी भी हैं, जो भी है, उनको ये डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस एक बार फिर वैसे ही बलवान हो गई तो हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि वो तो आपके वोटों में जी रहे हैं ना अभी तक। निजाम साहब। सर परिवार में जब बंटवारा होता है तो बहुत सारे लोगों को खुशी और नाखुशी होती है, लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है उसकी जवाबदारी है कि सबको जोड़कर चलना चाहिए जी। अभी जिस तरह के हालात देश में पैदा हैं, अब उनको भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को खतरा था, कांग्रेस को कभी खतरा नहीं था। अगर कांग्रेस को खतरा होता तो कांग्रेस समझौता नहीं करती कभी भी। अगर वो चाहती तो वो भी गलत बयानी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सेकुलरिज्म के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया। इसलिए मैं ये दावे से कहता हूं कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज नहीं तो कल वो सब एक साथ रहेंगी और उसकी शुरुआत हो गई है। आप देखेंगे कि अभी जितने भी चुनाव आएंगे, हमारा जो एलआई होगा अभी शिमला समझौते के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें अभी शिमला में जो हमारी अगली बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा और देश में बेहतरीन तरीके से एक नया दौर आएगा और उस नए दौर में वही भारत होगा जो पुराना था। सब एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करेंगे। निजामुद्दीन साहब, मगर स्मृति ईरानी ने आप पे पॉटशॉट, स्मृति ईरानी का आरोप लगा दिया है कि यह कौन सा यूनिटी है। बोले डीएमके वही था जिनके हाथ राजीव गांधी जी से, सुनिए दो मिनट, आपको याद होगा
कि अटल जी के जमाने में भी 24 दलों ने सरकार बनाई थी। ना, तब बट क्यों ये नहीं जो कहा जो इन्होंने? डिसएग्रीमेंट है निजामुद्दीन ऐसा जी, है कि पहली बात तो हम लोग जो हैं, हम लोग स्मृति ईरानी जी को नेता नहीं मानते। वो जो बातें करती हैं निहायत झूठी, सारी वीडियोस उनके यहीं लगे हुए हैं। आप उनके दर्जनों वीडियो उठा लीजिए सवाए झूठ बकने के, और वो कुछ नहीं करती। अभी उनके बोलने से अगर ऐसा होता तो अलग अलग आज क्यों बीजेपी तकलीफ में है? आज नड्डा जी क्यों भाग रहे हैं? आज गृह मंत्री क्यों भाग रहे हैं? क्यों आज मुसलमानों का साथ लेने की बात हो रही है? क्यों आज मुसलमानों को गले मिला रहे हैं? क्यों आज दरगाहों पे चादर चढ़ाने प्रधानमंत्री जी और योगी जी क्यों भाग रहे हैं? आज वो दिन आ गया है कि इनके एक एक घरों में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको ये लगने लगा है कि अब हमारे हिंदुत्व के बल पर अब सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की। क्योंकि ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नहीं कह रहा हूं, आप जो है आरएसएस के पांचजन्य की खबर को पढ़ लीजिए, जिसमें आरएसएस ने डायरेक्ट कहा है कि मोदी जी आपका चेहरा और आपका हिंदुत्व अब आपको बीजेपी नहीं जिता सकती। तो इसलिए आप खुद देखिए कि स्मृति ईरानी हो, आदरणीय राजनाथ सिंह जी हो या नड्डा जी हो, अब सिवाय झूठ बोलने, बदमाशी करने, धोखा देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। निजामुद्दीन जी, ये इसका एक्सटेंशन आम आदमी पार्टी डिसएग्रीज, बोले कि आपका व्हाट इज कांग्रेस व्यू ऑन ऑर्डिनेंस, आपका स्टैंड क्लैरिफाई कीजिए। केसीआर तो पूरे 400 कितने गाड़ी लेकर मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र में घुसे। केसीआर, चंद्रशेखर राव अपने पार्टी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप ही के लोगों को, कांग्रेस के ही लोगों को उन्होंने नेता बना के अपने पार्टी में रखे हैं, और आगे जाके मायावती को आपने इग्नोर कर दिया। टीएमसी, आज तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप कांग्रेस पे लगा रहे, लेफ्ट पर आ रहा है, दिस डिसएग्रीमेंट। निजामुद्दीन साहब, इसको मानना पड़ेगा, आपको काम बहुत करना पड़ेगा इस विषय। मैं केसीआर जी के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, दबाव की राजनीति डालने के लिए महाराष्ट्र में पोस्टर बैनर लगने लगे कि आप हमको जबरदस्ती रखिए, नहीं तो हम महाराष्ट्र में आपको नुकसान करेंगे। आप दोनों महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, एक एक गांव मोहल्ला आप जानते हैं। एक भी चीजों का उनके महाराष्ट्र में कहीं असर नहीं होगा। जिन लोगों ने यहां से, एक दो लोगों ने पार्टी छोड़कर उनके साथ ज्वाइन किया, मौलाना कदीर हैं औरंगाबाद से, एक आध मुंबई से, एक आध अलग जगहों से, उनको यहाँ की जनता ने पहले ही नकारा है। इसलिए चूंकि सरकार में है वो, तेलंगाना में पैसे के बल पर यहाँ आके उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के वोटरों का जो रुझान बन गया है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन निजाम साहब, हमारे दल को या हमारे एलआई को कहीं कोई खतरा नहीं है। वो चाहे महाराष्ट्र आए, चाहे आए, देश में सबको जाने की आजादी। माशाल्लाह, जबरदस्त। लेकिन निजाम साहब, मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि साहब देखिए, इसके पहले आपने, मैं आपकी बात कर रहा हूं निजाम साहब, आपकी और कांग्रेस की, आपने इसी तरीके से AIMIM को कोई खतरा नहीं समझा था। आप लोगों ने कहा था कि ये तो क्या है कि वो क्या मौसम के बादल हैं, आते हैं जाते हैं, उस किस्म के हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने आपको डैमेज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से केसीआर साहब को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। उनका चूंकि बॉर्डर एरिया है, कर्नाटक के साथ लग के है इस तरफ, और आगे जाकर के तेलंगाना के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जहां तक BRS का सवाल है सर, उसको नजरअंदाज मत कीजिए निजाम साहब। सर मैं आपकी बात से बहुत बिल्कुल सहमत हूं कि उनके पास के जिले हैं, उनकी बहुत सारी संस्कृति हमारे महाराष्ट्र के संस्कृति से मिलती है, उनके यहाँ लोगों का आना जाना है, रिश्तेदारियां हैं। लेकिन देश की परिस्थिति इस कदर ऐसी बन गई है कि जैसे कर्नाटक में किसी से कहना नहीं पड़ा। आप देखिए कि जिस तरह से वोटिंग का जो पैटर्न था, उसी तरीके से नया पैटर्न भी वही होगा, क्योंकि देश की जनता आज चाहती है कि भरोसे की लीडरशिप आए, जो बात करे और उस पर काम करे। तो कांग्रेस ने जो वादे किए उसको पूरा किया, और अपने सभी एलआई के साथ वो उसी तरह। कर्नाटक का जहां तक प्रश्न है निजाम साहब, कर्नाटक में आपकी लोकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही ताकतवर थी और है। DK शिव कुमार साहब को देख लीजिए, सीतारमैया साहब को देख लीजिए, इन दोनों को हराना नामुमकिन है साहब, सीधी बात है। जैसे ही आपने, मतलब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने दोनों को इकट्ठे मिला दिया और प्रॉमिस ले लिया कि आप दोनों एक साथ काम करेंगे, उस वक्त ही बिल्कुल क्लियर हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि यहां कांग्रेस को हराना नामुमकिन है।
बाकी ठीक है, आपने कहा कि भाई 450 का हम लोग गैस सिलेंडर देंगे, बिजली जो है मुफ्त में देंगे बीपीएल के लिए वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है, चलता है। और उसके ऊपर अभी तो खैर एजिटेशन भी चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, बाकी सब लोग हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि भाई हमसे लेकर के आप बीपीएल वालों को दे रहे हैं। तो दैट्स अ सेपरेट इशू, उसके बारे में कभी और हम लोग आर्गुमेंट करेंगे, बात करेंगे। इसी प्रकार की लीडरशिप क्या बाकी स्टेट में भी है आपके पास, निजाम साहब? बहुत मजबूती के साथ देखिए, ये लीडरशिप हमारे यहाँ कलेक्टिव है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से देश के कांग्रेस जनों के अंदर एक ताकत पैदा की, जिस तरह से उन्होंने देश में यूथ के साथ अपना बेहतरीन संबंध बनाया, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं में विश्वास जगाया, मैं आपको दावे से कहता हूं कि अभी 5 महीनों के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है। आप उसका रिजल्ट देख के 2024 की ताकत का अंदाजा कर लें। मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी आपके फेवर में ही आए थे रिजल्ट जी। इधर कोई नई बात नहीं है, पिछली बार भी आप ही जीते थे, पिछली बार भी आप ही जीते थे, और आपके यहाँ 2-3 जयचंद थे जो उस तरफ चले गए। गद्दारी का कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन 2-3 जयचंद थे ना, अब क्या करोगे उनके बारे में? इस बार गद्दारी का कोई चांस नहीं रहेगा, इसलिए इतनी अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। वेरी गुड। लेकिन सर ये भी देखा गया, चलते चलते ये भी बता दें सर, देखा गया है जो एनालिसिस हुआ है अभी तक, विश्लेषण जो भी चुनाव का हुआ है जब से मोदी जी आए, स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में बहुत फर्क होता है। स्टेट इलेक्शन में आप लोग जीतते हैं क्योंकि लोकल इश्यूज होते हैं। लोकसभा का जब चुनाव आता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आता है, फॉरेन पॉलिसी का सवाल आता है, मोदी जी की जो वाहवाही है यूएस में, बाकी देशों में, उसका सवाल आता है। वहां पर आप जरा थोड़े कम पड़ रहे हैं, जरा बताएं। सर देश वो भी देख रहा है कि वो चीन के मामले में वो फेल गए। अमेरिका में उनका झूठ आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान की मीडिया ने किस तरह से उनको बेइज्जत करना होना पड़ा। आप पाकिस्तान के इश्यूज को देखिए कि कभी भी कांग्रेस ने पाकिस्तान के जाके साथ समझौता नहीं किया, इन्होंने जाके बिरयानी खाई और वहां उन्होंने भेंट किया। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी ये फेल गए हैं। इनके पास तो सिवाय हिंदुत्व के अलावा कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो और जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, आप देखिए कि जितनी बड़े टेरर अटैक हुए इस देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के शुरुआती दौर में हुए। तो ये सब चीजें आज देश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस एक सक्षम विकल्प इस देश को दे सकती है, जिसके विदेशों में सबसे संबंध है। क्योंकि जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री गए और यहां से लोगों को ले जाकर अपने वाहवाही के नारे लगा रहे हैं, विदेशों ने इनको सराहा नहीं। आप देखिए नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक जब विदेश जाते थे तो किस तरह से पूरा देश उनके पीछे भागता था। इससे आपको लग जाएगा कि जो पॉलिसीज इनकी है वो सक्सेसफुल नहीं। निजामुद्दीन जी, आज बीजेपी का सोशल मीडिया ने 3-4 चीज हाईलाइट कर दी है। बोले कि आपके झूठे वादे, हिमाचल प्रदेश डीजल 3 रुपया और वैट के माध्यम से आपने बढ़ा दिया है। कर्नाटका में हाई एंड में आपने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दिया है। राजस्थान में पेट्रोल का दाम हाईएस्ट है पूरे देश में, हाईएस्ट। गहलोत सरकार, सर ये सोशल मीडिया कैंपेन सच्चाई है, झूठ है? ये बीजेपी का आईटी सेल है, ये बीजेपी का आईटी सेल है जो इतना ही झूठा है कि श्री भगवान गणेश जी को दूध पिला दिया खड़े खड़े पूरे देश में। इतना बड़ा झूठा आईटी सेल देश में कहीं नहीं है। इनकी सत्यता जानना हो तो आपको घरों में लोगों को सर्वे रिपोर्ट दिखानी चाहिए कि ये कह रहे, क्योंकि ये तो कब किसकी तस्वीर बदल दें, कब किसकी मुंडी कट करके दूसरी लगा दें। ये तो इतने बड़े फ्रॉड हैं इनके जो आईटी सेल वाले हैं। हर जगह ये मुंह की खाते हैं और उसके बाद फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आते। अमृतकाल का रिपोर्ट हर घर में पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया और बीजेपी के कार्यकर्ता। अमृतकाल कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाखों कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के एलाई हर घरों में जाकर अभी कैंपेन कर रहे हैं। हमने भी बूथ कमेटियों से लेकर ब्लॉक, तालुका, जिला, सब जगह अपनी कैंपेन का रास्ता शुरू रखा है और सत्य दिखाने की बात कर रहे हैं कि आज देखिए ये सच था, ये आईटी सेल ने उनके दिखाया और ये देश में सत्यता है। लेकिन एक चीज है निजाम साहब, चीजों से कुछ नहीं होता। निजाम साहब एक चीज तो है, आज की तारीख में बीजेपी आपकी बहुत मदद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बहुत ज्यादा मदद कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो जिद पकड़ी हुई है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत नीचे नहीं आएगी, 1150 ही रहेगी, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे नहीं आएगी,
इन सब चीजों को लेकर के आपको बहुत फायदा हो रहा है सर, ये मानना पड़ेगा। आज अगर सर ये सब्सिडी देना शुरू कर दें आपको तकलीफ हो जाएगी निजाम साहब। देखिए सर, जो सत्यता है उसको, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी मेकर ही नहीं है ना। सीतारमन कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है कि वो देश की चीजों को समझ सकती। रिजर्व बैंक के जिस आदमी को उन्होंने गवर्नर बनाया उसका कोई संबंध इकोनॉमी से नहीं है। इसी तरह के इनके जो मिनिस्टर हैं, आप देखते I think Mr. What's his name? Shubhakanta Ghosh. I think he was a graduate in English literature, right? From St. Stephen's College, if I'm not mistaken. वो तो इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेजुएट हैं साहब, आरबीआई के जो गवर्नर हैं। अरे सर, ग्रेजुएट होना और किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना, नहीं, उसके बाद उन्होंने पीएचडी करी है सर। बहुत सारे होते हैं लेकिन उन्होंने पीएचडी भी करी है सर। डॉक्टर्स बहुत हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, सबका इलाज करना ड्यूटी है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड होता है आदमी उसके पास जाता है। मोदी जी को तो राहुल गांधी जी आदमी है, अगर पढ़ा लिखा आदमी कोई बैठेगा तो उनकी बात नहीं सुनेगा। तो राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बनाए हैं कि जो उस विभाग का स्पेशलिस्ट नहीं है उसको उसमें बिठा दो। तो राहुल गांधी जी के लोग करते रहते हैं। अरे अपने नेता के बारे में तो सुन लो यार निजाम साहब। तो राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं आपके मुताबिक? सर आवाज नहीं आई। तो राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। देखिए सर, ये तो जब समय आएगा, क्योंकि वो परिवार तो बलिदान देने वाला है, वो कुर्बानी देने वाला परिवार है जी। तो देश पहले होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी बाद में होगी। पहले देश, क्योंकि इनसे देश बचाना जरूरी हो गया है, क्योंकि देश बचा रहेगा तो बहुत सारे प्रधानमंत्री आ सकते हैं। क्या बात है साहब। निजाम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार आपको। वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सो मच निजाम साहब। सो नाइस। थैंक यू सर। लवली टॉकिंग टू यू। Always wonderful talking to Nizamuddin Rahim Saab. He's a firebrand spokesperson of Congress, the amazing Indian loyalist. National Congress. He's an amazing loyalist of the Congress party. Of course, he also deviated from the Congress in the middle, but that doesn't matter. Everybody at that time found Mr. Owaisi to be quite attractive, but let's not go there. It happens. This is politics. And at the moment with us, Mr. Rakesh Rathod of the Aam Aadmi Party. Rakesh Rathod Saab, namaskar. नमस्कार सर। जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राकेश राठौड़ साहब बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज तो, मतलब माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे लगता है कि सलून से आए, बिल्कुल अपनी मसाज वगैरह करा करके। जबरदस्त, बिल्कुल फैंटास्टिक, यू आर ग्लोइंग, रियली नाइस। क्या क्या करके आए हैं साहब? पक्का हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? कुछ नहीं सर, मैंने अभी टीवी चैनल पे हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका स्टेटमेंट सुना जी कि मॉनसून आ चुका है, तो मॉनसून को वेलकम कीजिए, उसका आनंद लीजिए। आप जो आपकी सामान्य नागरिकों को जो पीड़ा हो रही है, जो दुर्दशा हो रही है, उसके तरफ आप ध्यान न दे, उसे दुर्लक्ष्य कीजिए। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ और मॉनसून का मजा ले रहा हूँ। मॉनसून के मजा ले रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। तो आप बरसात का कोई गाना गाएंगे या कुछ गाएंगे? अच्छा ये तो बताएं कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, जिस प्रकार वो चल रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है कि वो बाकी ऑपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे। लग ऐसा रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। राकेश राठौड़ साहब देखिए सर, आम आदमी पार्टी का जो फंडामेंटल, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहे हैं, ये बड़े साफ रहे हैं बहुत पहले से। उन्होंने कहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी जो पक्ष हैं, जिन्होंने सालों साल भारत को लूटने का काम किया है जी, इन लोगों के सामने हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या कांग्रेस हो या बाकी जितनी भी पार्टी हो। इसी तहत आज हम देख रहे हैं कि जितने भी पूरे देश में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को गैर कानूनन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके जो बेसिक जो उनके ड्यूटीज हैं उससे डेविएट होके ये जो लोग अपोजिशन पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करके उन्हें जेल में रखने की जो एक चाल जो चल रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, उसके खिलाफ सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म में आना जरूरी है। ये सारे देश को पता है और उसी के तहत सारे अपोजिशन पार्टी एक जगह पे आए भी। लेकिन फंडामेंटली हम लोगों के विचारधारा अलग है, हम लोगों की
जो मंशा है वो बाकी पार्टियों से काफ़ी अलग है। हम देश के लिए समर्पित हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम देश को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, जबकि ये लोग जो हैं ये लोग LIC को बेच के पैसा लेना चाहते हैं, BPL को लेके भारत पेट्रोलियम को बेच के पैसा लेंगे, ये हमारे यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट रखा है उसे तुड़वा के ये पैसा लेंगे। ये जो 30% की जो राजनीति चल रही है हर जगह, ये हमारी राजनीति नहीं है। तो कहीं तो भी अलाइनमेंट होने में दिक्कत तो जाएगी, और ये हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत तो हमें जा रही है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है सर, सॉरी प्रदीप जी, एक सेकंड ना प्लीज। यस प्लीज गो। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, सब पार्टीज ने आपको सपोर्ट किया है सर, सभी पार्टी ने आपको समर्थन दिया है, यहां तक कि लालू जी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि उनके जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे। कांग्रेस अभी तक कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है सर, ये क्या है मतलब मेरी समझ के बारे? राकेश राठौड़ साहब देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही उनका तो दिल्ली से सफाया हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। आदरणीय शीला दीक्षित साहब मैडम के जाने के बाद, उनके देहांत के बाद कांग्रेस में वो दमखम रहा नहीं है। वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कहीं हमें नजर नहीं आ रही है। माकन साहब सिर्फ ऑनलाइन दिखते हैं, अपने ट्विटर पे उनका जोश दिखता है, लेकिन जो हमारे राजनीति हैं लोगों के बीच उनकी कोई भी साख बची नहीं है। तो अभी इनके पास बचा क्या है? अभी इनके पास एक ही चीज बची है कि कैसे तो भी करके कोई ऐसी कोई चीज करे जिससे आम आदमी पार्टी की जो रफ्तार, जो एक एक्सप्रेस मेल निकल चुकी है, जो वंदे भारत की ट्रेन निकल चुकी है, उसको कहीं तो भी रोकने की जो साजिश है, इसके पीछे कांग्रेस लगी पड़ी है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने भी दिया। अब लालू प्रसाद यादव जी क्या है? ये तो बहुत ही पहले से कांग्रेस पक्ष के साथ के उनके एक बहुत ही वफादार साथी रहे हैं। कांग्रेस जैसी बोलती है वैसे लालू प्रसाद यादव साहब करते हैं। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लालू प्रसाद साहब का ये जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया उसको सुन के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो राठौड़ जी, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से केसीआर चंद्रशेखर राव जी BRS को लेके एक स्टॉर्म कर दिया उन्होंने, आज शोलापुर में है। इनफैक्ट बहुत सारे नेता जो NCP, कांग्रेस और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता भी आजकल BRS ज्वाइन कर रहा है। Now this is the vacuum created by the आम आदमी पार्टी, बिकॉज आपने शायद आपके महाराष्ट्र टीम को डिसॉल्व कर दिए। Now this vacuum is being filled. Do you think that this vacuum is filled by K. Chandrasekhar Rao? Because just ढंग से वो पूरे border areas में छा गया है. In fact, you find a surge of leaders leaving various parties and joining the BRS. It seems to be the party of the future. So how do you see it? Is it because Mr. Kejriwal, didn't want or didn't take much interest in the Maharashtra politics that this big vacuum is being filled by somebody else? कैसे देखते हो Chandrasekhar Rao's coming to Cholapur and various other areas? Definitely, sir, it won't be out of place to say that somewhere the central organization or Aam Aadmi Party failed to concentrate on state of Maharashtra, and therefore the organization which was built like for over 10 years, the same organization continued for years and years, and ultimately we saw that many of the office bearers, they considered their post as their hierarchy, that nobody can remove them from their post which they are holding at that time. And definitely a vacuum is created, and I must appreciate the honorable Telangana Chief Minister that he has at a very appropriate time, not only he entered into Maharashtra politics, but he is actually genuinely and sincerely looking into the Maharashtra politics. If you see the slogan which they have given, "Ab ki baar Kisan Sarkar." Now, definitely this is something which is going to strike. The timing also, entire Maharashtra, हर जगह पे आप देखेंगे तो वारकरी लोग जा रहे हैं, हर जगह विठोबा के नाम चल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, तह तक जा रहे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उसे दूर करने की मंशा भी रख रहे हैं। काफ़ी लोग BRS की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे भी कहीं से मुझे भी न्योता आया है कि वह आप भी आ जाइए, लेकिन
थोड़ा सा अभी उसके उस चीज के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आई सी अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू फॉर दिस अपकमिंग party, and if they really take their bandwagon in the same way the way they are moving right now, I can see like they have actually some future in So Maharashtra. which means Aam Aadmi Party over here is more or less finished, isn't it, in Maharashtra? Uh, Definitely, sir. I won't say that you are wrong. I totally agree with you. Somewhere, Aam Aadmi Party Maharashtra unit has been miserably failed to deliver. Uh, People were eager to see Aam Aadmi Party on ground. People Yes, were eager to we give can vouch for power. that. Yes, Yes, to see Kejriwal coming in on in the state of Maharashtra and Yes. taking charge, but I'm really sorry to say, but the local body, the Maharashtra unit, they really did not just betray the party, but they actually betrayed the faith of the citizen of Maharashtra. लेकिन राकेश राठौड़ साहब, केजरीवाल जी को क्या हो गया इसमें? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो वो बहुत अकल वाले हैं, दूरदर्शी हैं, उनको एक एक चीज दिखती है। महाराष्ट्र में आके उनको क्या हो जाता है? क्या कोई ब्लाइंड स्पॉट है उनका? क्या है कि यहाँ का जो लोकल नेतृत्व जो है, उनका क्या होल्ड है उनके ऊपर कि उनके आगे वो उनको कुछ दिखता ही नहीं है? सर काफी तलतोजहद करने के बाद, आफ्टर आई वेंट इनटू लिटिल डीप इनटू द इशू, आई केम टू नो दैट in fact Mr. Kejriwal, before or at the time of forming this party, he was in Mumbai and his first press conference happened in South Bombay. Yes. So he has that deep roots, deep connection with Mumbai as well as with the state of Maharashtra. However, the duration which we have seen Aam Aadmi Party working in the state of Maharashtra is not less. They have been here for more than 10 years. It's almost more than a decade. But where we can see the influence of the party? Nowhere. We are just seeing couple of faces and nobody else. And these faces, they actually don't have anything. They don't have manpower behind them. They are scared. They are scared to bring new people into the party. And that is the main reason why this party has suffered. राठौर साहब, how do you see स्मृति ईरानी cast a big प्रश्न उठाया कि ये कौन सा ऑपोजिशन यूनिटी है? बीजेपी called it परिवारवाद. ये परिवारवाद है. एक्सेप्ट केजरीवाल, रेस्ट ऑल आर डिनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले हैं. लालू यादव पार्टी और कांग्रेस और एवरीबॉडी इफ यू सी, और सब परिवार बचान. She said that DMK's hands are red with Rajiv Gandhi assassination. How can they be a natural ally of the Congress? They talked about Aam Aadmi Party, open revolt. You give a stand where Delhi ordinance is concerned. Then we will join the bandwagon. That is what Kejriwal said. Then Mayawati was not included. Mayawati was left out. KCR has moved on his own. तो अलग अलग चीज जो मायावती वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट इन वेस्ट बंगाल, तो ये अलायंस होगा कैसे? 2024 में एकता कैसे होगा कि यू फाइंड ऑल दिस मेजर पार्टीज व्हिच आर देयर हैविंग अ प्रॉब्लम विद द कांग्रेस? इज व्हाट स्मृति ईरानी सेड द राइट थिंग, that they don't should be a natural alliance at all? It will fall down. See, so there are two aspects which we have to see. Number one, on a national level, from BJP perspective, and number two, on a state level. Now, if we speak about national level, actually BJP don't have anything to say. Basically, they are in power since so many years. People have seen them, whether they have delivered or not, whether they have fulfilled their promises or not. They came to the power on the basis of false promises that they will check inflation, they will bring down the price, they will improve the education quality, they will give employment. However, they have miserably failed on all these spots. Number two, what is interesting is, if already they are giving so much, if already the BJP party is doing so much, why there is a need to do a propaganda against the Honorable Prime Minister? All the news channels, they are just bragging about Narendra Modi Sahab, which I don't think so is essential if the government is fulfilling their duties and performing, fulfilling and performing their duties, if they are delivering what they have promised. Now, if you see on a state level, I can quote what Honorable Mamata Banerjee had said in one of the press conferences, that the
places should be allotted as per the power or strength of that party in that particular state. Now, this statement has a lot in it. It shows that the intention of the political parties to come together is much stronger. They have given a well thought on it. They have already done their homework, and all the parties, they know their limitations. So what we see in usual situation where every party tries to grab maximum during that particular duration or take advantage of the opportunity, but here I can see that all the political parties are coming together for a particular agenda, which is to save democracy, which is to safeguard our constitution, and I think the larger agenda is to remove BJP from the power. लूट काल वर्सेस अमृत काल। आप कह रहे हैं कि बीजेपी रिपोर्ट कार्ड, इंप्रेसिव रिपोर्ट कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी घर घर बेच रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट स्ट्राइक, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, ये तो नेशनल इश्यूज हुई है, जैसे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। बोले कि हमारा देखो प्री मोदी पोस्ट मोदी, प्री मोदी एयरपोर्ट्स 74, पोस्ट मोदी 9 साल में 148 एयरपोर्ट्स। कह रहे कि कॉलेजेस एवरी डे 2 कॉलेज का स्थापना हो रहा है, एवरी वीक 1 यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रहा है, 9 इयर्स में 7 IIM, 7 IIT, थर्ड बिगेस्ट, impressive record। आप I mean, how are you going to beat it, राठौड़ जी? कैसे? रिपोर्ट कार्ड इज फैसिनेटिंग। अब ये तो सिर्फ एक छोटा सा मैंने पढ़ लिया, रिपोर्ट कार्ड इज ह्यूज विद द बीजेपी इज टेलिंग एवरीवेयर। Say, interestingly, this report card is not what we see in terms of examination. We are talking about politics. We are talking about a ruling party. Now, practically, they don't have to send this report card to every household or to every citizen. People automatically should understand, and they should, feel that yes, there is development happening. Now we saw that honorable our prime minister, they inaugurated some bridge, and just in couple of days that tunnel or that bridge it collapsed, or it got into dilapidated condition. There are so many other such things. If we see, like, whenever our prime minister, he goes to a foreign nation on a trip, like recently he went to America, even last time he gave them a contract of Boeing aircrafts. This time he bought drones from USA. But I can't see like what we are getting as a country, what America is giving us. So whenever we are going over there and we are just giving them, we are just improving their economy, I don't think so that is going to benefit our country. But we have to see, when we talk about report cards, we have to see that is there peaceful environment. We can't forget Manipur. When BJP came in power, at that time our honorable home minister went to Manipur, and they were like news all over that Amit Shah went and everything there is a peace in Manipur. But now we can see that entire Manipur is burning. Same happened everywhere in Karnataka the moment BJP lost elections. So at what cost? You are giving roads, you are giving bridges and everything, but at the same time we have to see how much loan our India has taken. Now we can't ignore that aspect also. लेकिन राकेश राठौड़ साहब, आपसे ये सवाल है, व्यक्तिगत सवाल, आप कब तक और इंतजार करेंगे कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व आपको वापस आमंत्रित करेगा या आपसे बात करेगा बिफोर यू ज्वाइन BRS, यानी KCR को ज्वाइन करने के पहले? कितनी देर तक आप इसी जगह पर रहेंगे सर? अब देखिए सर, the only reason to join आम आदमी पार्टी was एक ईमानदार पार्टी है, एक देश के लिए कुछ करने की मंशा रखते हैं, उनके इंटेंशंस एकदम साफ है, रोड मैप है, और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसमें एजुकेटेड लोग हैं और अनपढ़ लोग नहीं है, गवार लोग नहीं है। जैसे आप थोड़ी देर पहले एक डिबेट कर रहे थे कि हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको डिग्री कोई दूसरे विषय की होती है, और हमारे यहाँ के एविएशन मिनिस्टर होते हैं, उनको डिग्री किसी और चीज़ में होती है। सो ये एक ऐसे, आई एम जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल्स। सो
आम आदमी पार्टी जो देती है वो एजुकेटेड लोग देती है। हम लोगों को पता है कि किस तरह से देश चलाना चाहिए, किस तरह से राज्य चलाना चाहिए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। बिल्कुल मैं राह देख रहा हूँ कि हमारे जो नेतृत्व हैं वो पक्का इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। दे विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द इशू एंड दे विल डेफिनेटली दे विल कॉल or they will try to get in touch, and definitely I will always be happy to serve for this party. Rathod ji, at the beginning of the program you said you are happy, you are enjoying the monsoon, like Chief Minister Eknath Shinde ji ne bola ki monsoon aaya hai, enjoy the monsoon. Are you agreeing with him or you are agreeing with Aditya Thackeray? Aditya Thackeray ji ne bole कोके सरकार monsoon पूरे मुंबई के बैंड बजा दिया, सब जगह पानी है, everybody no service to the poor people, poor and downtrodden are suffering, full of corruption, BMC is full of corruption. तो किसको आप किसके साथ हो? Are you with CM Eknath Shinde and enjoying the monsoons, or with Aditya Thackeray and Aam Aadmi Party saying no, nothing has been done, nothing is right in Mumbai? किस पक्ष पे हो आप, किस तरफ हो? सर आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को लीजिए या आदित्य ठाकरे साहब को लीजिए, दोनों एक ही कॉइन के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। दोनों एक साथ थे, इन्होंने सालों साल बीएमसी के ऊपर राज किया है, मुंबई पे राज किया है। जो हालात पहले थे वो आज हैं। जो पहले हमारे यहाँ पे सारा जो मिलन सबवे पानी में डूब जाया करता था वो आज भी हो रहा है। अलग परिस्थिति कुछ भी नहीं है साहब। एज अ मुंबईकर, when I question myself that I have voted for a particular person or for a particular party for such a long time, I have been loyal with the party, but had the party been loyal with me? No, absolutely no. So this is a time that I think an opportunity should be given to some other political party and to see at least what they have, whether they perform or not. मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ राजनीति करके नहीं चलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जो घर घर के जो एक मसले हैं, जो सामान्य नागरिकों के मसले हैं, हम उनकी बात करिए और उसमें राजनीति नहीं कर सकते हैं सर। जैसे मॉनसून का है, हमने अभी बस 2-3 दिन की बारिश आई और हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन किस हाल पे है। अगर 2-3 दिन या फिर हम जो अभी साइक्लोन आया था वो अगर साइक्लोन मुंबई में आ जाता तो क्या हाल होते। सो वी आर एब्सोल्युटली नॉट रेडी एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू put blame on one or another. I don't think so it is going to help sir. लेकिन यहीं पर इसी वजह से लोग ये लोग अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद लेकर बैठे थे कि आप लोग बीएमसी में कुछ करेंगे साहब। प्रदीप जी और मैं आपको बता दें, ना जाने कितने स्लम्स में गए, कितनी जगह पर गए। अरे कोई ये वेट कर रहा था यार आम आदमी पार्टी आएगी, झाड़ू को वोट देंगे इस बार। अब तो लोग बोलते हैं झाड़ू तो झाड़ू फेर के चला गया, कहां गया कुछ मालूम नहीं है। मतलब क्या कर दिया आप लोगों ने। मुझे आई एम सो सॉरी, आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। राठौड़ साहब, ये क्या हुआ? यू हैड सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मतलब आई फील पर्सनली डिसअपॉइंटेड। आई एम सो सॉरी फॉर ब्रिंगिंग दिस अप अगेन एंड अगेन। व्हाट इज द मैटर विद दिस पार्टी? यू हैड सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। राठौड़ साहब, सही, इसमें बात एकदम सीधी है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जो लॉयल वॉलंटियर्स थे, जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी से, वो कहीं तो महाराष्ट्र की जो नेतृत्व था उससे काफ़ी उदास था, उससे नाखुश था। और काफ़ी कोशिश करने के बाद, जल्दोजहद करने के बाद, जब पता चला सब लोगों को कि कहीं तो भी दिल्ली की जो लोग हैं वो भी महाराष्ट्र के लिए थोड़े उदासीन हैं, यहाँ का नेतृत्व बदलने के फिराक में नहीं नजर आ रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता थे, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स थे, वो छोड़ के कहीं और चले गए। काफी लोगों ने राजनीति छोड़ दी, काफी लोग किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। तो ये जो हाल आज आप देखेंगे तो बॉम्बे में ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी कहीं पे भी नहीं है। हम लोग जब तक थे तब तक आपको आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी। आज आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दिखाई। करेक्ट। कोई एजिटेशन नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरह से इलेक्शन का आप ड्यूरेशन देखेंगे, एवरी पार्टी हैज फास्टेंड देयर बेल्ट, एवरी पार्टी इज रेडी विद देयर विजन, एवरी पार्टी इज रेडी विद देयर प्लान। Pradeep ji and I have seen the same thing happen. Pradeep ji and I have seen the same thing happen earlier. 2016-17 में भी यही हुआ था। पूरी लीडरशिप को डिसॉल्व कर दिया गया सडनली एंड मूवमेंट पर। ये क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। क्या मुंबई से कहीं किसी लॉबी का ऑर्डर आता है केजरीवाल साहब को कि यहाँ पे आपको लड़ना नहीं है?
मुझे मुझे ऐसा लगता है। क्यों प्रदीप जी आप बताएं, मतलब No, मुझे it's मुझे a तो very ऐसा sorry लगता state है of very affairs strange। because your huge promises, issues were taken up. People लोग feel साथ में betrayed। जुड़ गए थे, आपके कार्यकर्ता गली गली घूम रहे थे, और one of the best issues affecting Mumbai and Maharashtra was being taken up by Aam Aadmi Party. That's right। And Yes। suddenly everything is gone. I mean, it's just Yes। like the rain just come and everything is all the dirt is. So Yes। it's very bad state. I mean, whom are you going to blame? Now this The time workers are demoralized. The workers are not at all. तो their सर morale अगली is- बार आपका विश्वास कौन करेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए एकदम अरविंद केजरीवाल जी जाग जाते हैं और कहते हैं यार मुंबई में कुछ करना है, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। अब हर एक कोई बोलेगा आप लोग आते हैं, फिर उसके बाद ना जाने क्या डील हो जाती है आपकी कौन सी पार्टी के साथ, आप फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, लगता है ऐसा है। खैर, we can wish you all the best. Aam Aadmi Party is one of my favorite parties. As far as Maharashtra is concerned, I personally think Maharashtra Navnirman Sena should be given a chance, and within the BMC, I think Aam Aadmi Party should be supported, just like we have supported you in Delhi and in Punjab. You're doing a wonderful job over there, but I don't know what happens over here in Mumbai. In fact, and sir, I Maharashtra. would say that Aam Aadmi Party, MNS, the upcoming party BRS, they should form a third Front, yes. third front, Absolutely. and they should come up, and they have Correct. a high potential. और together. सबसे बड़ी बात है, all of you have a vision. All of you Yes. have a vision which is different from Definite. from the mainstream parties. मतलब बाकी सबको मौका दिया गया। जो आपने पंजाब के अंदर जो आपका जो स्लोगन था, सबको मौका दिया, अब हमें भी मौका दीजिए, वो मतलब बहुत जबरदस्त चीज है। और यहाँ पर मुंबई में तो वेरी फ्रैंकली वो तो हम ही बट पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा कि आम आदमी पार्टी का क्या सपोर्ट था साहब, क्या समर्थन था, Yes. और क्या आपके वर्कर्स काम कर रहे थे। सर, हमने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है पार्टी राठौड़ के साहब, लिए। अब मैं आपको दाद देनी पड़ेगी, आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। आज भी आप अरविंद जी को आप सपोर्ट करते हैं। मैं साफ बात बता रहा हूं कि आपकी तरह बाकी सब लोगों का भी दिल टूट गया है बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, जिस प्रकार मुंबई और महाराष्ट्र को नजरअंदाज किया गया है। वेरी सैड, रियली एंड ट्रूली सैड, बट ऑल द सेम, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई होप यू जॉइन द BRS एज सून एज पॉसिबल। बढ़िया रहेगा सबके लिए। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। Jai Hind, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Well, that's just about it for this show. I don't think a gentleman from the Shiv Sena is joining us. Mr. Kodalkar seems to be missing in action. He seems to be missing in action. Right. Let's take comments if we have them. Do we have the comments today? Can we have them on, please? Right? Can we have the comments on, please? There you go. This, of course, is Mr. Milind Kapade. MBA was formed for Vasuli. Marathi Manus cheated. This is what he says. Well said. Tell us more, all you know. Mr. Joel Moses. I don't think he likes Aditya Thackeray very much. ये मिलिंद कापड़े साहब के बारे में है। चलिए आगे बढ़ें। Can we move on, please, or is that the only one? जी. That, of course, is Mr. Bharat Singh. It's utterly ridiculous, insulting, and criminal to state that Rahul Gandhi speaks like a statesman who is convicted for 2 years jail term on a criminal defamation case. Does it mean criminals can be a statesman? That is Nagaraja UKR. That's what he says. Well, there are lots and lots of other judicial fora that he has to go through. दो मोदी भक्त and दो अंध भक्त views. प्रदीप जी, आपका तारीफ है सर। बहुत तारीफ है ये कौन? अजमन जमाल साहब। जमाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया अंध भक्त बुलाने के लिए। सो नाइस ऑफ यू सर। ये क्या है? ये नॉन अलाइंड साहब है। नॉट श्योर व्हाट द वीड वाज। ड्रग्स वाले सर। मे बी हनुमंत पवार कैन एक्सप्लेन व्हाटएवर इट इज। श्योर इट इज ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी। He's talking about the weed that Hanuman Pawar. Hनुमंत पवार साहब smoked. Right, wonderful. At least this guy's got a sense of humor. That's nice. Finally, Okay. excellent, Dr. Gupta, says Raj VNNZK, right? Do we have anything else? Dr. Shagan Gupta, you are the best. So says Kishoru Rania. All right. Right, that's it. That's just about it. That's all the comments for today. आप इसी तरह अपने comments भेजते रहें, please. And we'll of course read them out right over here on this show. जहाँ तक नेशन नाउ का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा, प्रदीप जी भी करेंगे, भले ही आप हम दोनों को अंधभक्त बुलाएं। राहुल गांधी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी भी तारीफ होगी यहाँ पे।
उद्धव ठाकरे जी ने जो कोविड में यहां पर किया था बतौर मुख्यमंत्री के की भूमिका निभाते हुए, वो बहुत जबरदस्त काम था और मैं आज तक वो मेंटेन करता हूं। लेकिन जो लोग आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यूएस में जो उनकी ट्रिप थी उसको लेकर के, और जिस प्रकार ये कहा जा रहा है कि एक सवाल जो पूछा गया नरेंद्र मोदी जी से उसका वो जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए, मुझे तो ऐसा लगा that नरेंद्र मोदी knocked out the reporter completely. I mean, the kind of answer that he gave Pradeep ji was fantastic. What he said was said to be a democracy. We are a democracy. Democracy is in our DNA. It's like saying, is your name really Narendra Modi? That's what the reporter was essentially asking, who herself, by the way, is of Indian origin. So, and the worst part is, the entire anti-Modi lobby is just latching on to that one question and forgetting about all the other deals which have been signed over there. The 15 to 19 odd standing ovations that Mr. Modi got in the US Congress, and the 75 times that the US Congress applauded Mr. Modi. You're forgetting all that. And you're just latching on to one thing. Effectively, what you're doing is you're clutching at straws in the wind. Terrible, terrible. But all the same, I'm very happy with the Prime Minister's visit to the US and the great reception that he got in Egypt. That does not mean that the Congress is not doing well. They are doing well. So, which means this time round, the BJP really has a fight on its hands. And that, by the way, is good for democracy. So from 350 it has come to 300. Yes. Mr. Amit Shah, 300. last figures were plus 300 plus. 300 plus. Mr. Daruwala said 500 plus, 350 plus, now 300 plus. Daru was very extravagant with his views on BJP. Right. And that's just about it for this show. आज के नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही. From both Pradeep ji and myself, आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.